वेलकम टू द कृष्णा को महोत्सव में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रिसिएशन रिजर्व्स एंड प्रोविजंस ऑडिट। डिप्रिसिएशन रिजर्व्स की और रिजर्व्स एंड प्रोविजंस का ऑडिट कैसे किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन, डिप्रिसिएशन रिजर्व्स एंड प्रोविजंस आर इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ऑडिटिंग them ensures correct computations, proper recording and compliance with accounting standards. ऑटोमाइजेशन रिजर्व और प्रोविजंस लेखांकन की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इनके ऑडिट से सही गणना, उचित रिकॉर्डिंग और मानकों का पालन सुनिश्चित होता है। ऑडिट ऑफ डिप्रिसिएशंस। Audit of depreciations, meaning depreciation is the systematic allocations of the cost of an assets over its useful life. मूल्यह्रास वह प्रक्रिया है जिसमें किसी संपत्ति की लागत को उसके उपयोगी जीवन के दौरान व्यवस्थित रूप से वितरित किया जाता है। Objectives of audit: verify correct method of depreciations, सही विधि का उपयोग। Ensure accurate computation, check consistency with previous years। Ensure proper disclosure in financial statements, वित्तीय विवरण में खुलासा। Common method: straight line method, written down value units of production method। Audit steps: examine asset register, review depreciation policy, recalculate depreciations, check posting in ledgers and accounts। फिर है audit of reserves। Reserves are profits set aside for specific of general purpose। Objective of audit: verify proper creations and classifications, ensure compliance with law and company policy, check adequate disclosure of financial statements, detect overstatement or misuse। Types of reserves: revenue reserves, operation, कारोबार में बचाया गया लाभ। कैपिटल रिजर्व, पूंजी लाभ या विशेष उद्देश्यों के लिए। स्पेसिफिक रिजर्व, भविष्य के जोखिम उद्देश्यों के लिए। ऑडिट स्टेप्स: वेरीफाई बोर्ड रिजोल्यूशंस अप्रूवल। सेकंड, एग्जामिन ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चेक यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। ऑडिट ऑफ प्रोविजंस, मीनिंग प्रोविजंस आर अमाउंट्स सेट असाइड टू मीट नॉन लाइबिलिटीज और probable losses। Objectives of audit: verify adequacy of provisions, check computations based on reasonable estimates, ensure correct treatments in accounts, confirm disclosures as per accounting standards। Common provisions: provision for doubtful debts, provision for taxation, provision for depreciation, provision for warranty। Audit steps: examine supporting documents, review management estimates, verify computation and posting, ensure adequate disclosure in notes। Difference reserve and versus provisions. Purpose of reserve: appropriation of profit, and purpose of provision: meeting liability of probable loss। Created from reserve created from profit after tax, or provisions created from expenses or anticipated loss। Reserve disclosure balance sheet equity side, or provisions disclosure liability side or notes। Reserve basic example: general reserve, capital reserve। Provision example: provision for bad debts, taxation। Importance of audit: ensure correct computation of depreciation reserves and provisions। Second is detect overstatement, understatement, or ensure compliance with the accounting standards, और provides reliable financial statements। तो ये इंपॉर्टेंस है ऑडिट की। और कंक्लूजन, नेक्स्ट है कंक्लूजन। ऑडिट ऑफ डिप्रिसिएशन रिजर्व एंड प्रोविजंस एंश्योर एक्यूरेसी, फेयरनेस एंड कॉम्प्लियंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें की आइडिया से प्रॉपर ऑडिटिंग ऑफ दीज आइटम प्रिवेंट्स मिस स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजिशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।